Assalamu alaikum, grade 5 students. How are you all? Good. Okay. So, can you please remind me that what is the name of our science chapter? Yeah, the name is very interesting. Okay. Good. Oops. Believe me, it was ice a minute before. And yesterday we learned some new terminologies from the chapter. Oops, believe me, it was ice a minute before. And today is our story day. I will tell you this story, but you know, in this story we have many different infographics. Okay, so while listening to this story you also have to focus on the pictures, diagrams. और ये diagrams क्या कहलाती हैं? Infographic. Okay, so in this story बहुत सी चीज़ों को जो explain किया गया है वो infographics के ज़रिए किया गया. और infographics क्या होते हैं? कल हमने ये terminology भी सीखी थी. Infographics होता है कोई भी डाटा पिक्चर के ज़रिए या डायग्राम के ज़रिए क्लियर करना, उससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं. सो जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा होगा, कल हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी पढ़ा था. लाइक आवर टेम्परेचर इज़ गोइंग हॉटर डे बाय डे. तो ऐसा क्यों हो रहा है? एंड वी ह्यूमंस आर द मेन कॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग. सो लेट्स लिसन टू दिस स्टोरी एंड आफ्टर दिस स्टोरी आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन. सो आर यू रेडी गाइज? Okay, now close your books and be careful and listen me carefully. Okay, so I'm going to start this story, and the story is, oops, believe me, it was ice a minute before. This picture of the North Pole. The polar bears who lived on large plains of ice cannot find much ice to live on. So, where has all the ice gone? Every year, the temperature of the planet Earth is increasing and it is getting hotter day by day. Due to which, much of the ice in the polar regions has melted away. This effect is known as global warming. Global warming is the biggest crisis humankind is facing at the moment. So what are the signs of global warming? What are its causes? What are the problems we are facing due to global warming? And what are the solutions? We will find the answer of these questions through infographic. Infographics is a new and interesting way of presenting information. Infographics make it easy to understand and remember a piece of information. So here are infographics that explain the causes and effect of global warming. See, in this graphics like glaciers, humidity, spring coming earlier, species migration, and what are its causes and effects. Now look at this picture. Global warming causes and effects. Earth's temperature has risen about 1 degree Fahrenheit in the last century. You can see in this picture, in this diagram. Here is another way of looking at the causes and effect of global warming. So global warming effects. How to solve this problem at individual level? Now you can see in this diagram, like don't fly, like cars, fuel efficient cars we need, doing something good for the trees, plant trees, eat less meat, use less cloth, we have to use cloth bags. So here how to solve this problem at individual level. So how to solve this problem at national level? You can see in this picture. So automobiles will be banned within the city, travel will be accomplished via public mass
transit and personal rapid transit systems. With existing roads and railways connecting to other locations outside the city. 40 to 60 megawatt solar power plant will supply power for all construction activity. Photovoltaic modules will be placed on rooftops to provide solar energy to 130 megawatts. Wind farms will be established outside the city's perimeter capable of producing up to 20 megawatts. The city also intends to utilize geothermal power in addition. There are plans to host the world's largest hydrogen power plant. Water management, a solar powered desalination plant will be used to provide the city's water needs, with approximately 80% of the water used being recycled. Wastewater will be refused as many times as possible, with this grey water being used for cross irrigation and other purposes. Biological waste will be used to create nutrient-rich soil and fertilize, and some may also be utilized through waste incineration as an additional power source. Industrial waste such as plastic and metals will be recycled or reproduced for other uses. So this is very sad story. So आई एम श्योर कि आपको तमाम ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता चला होगा. आपको ये भी पता चला होगा कि किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को इंडिविजुअल लेवल पर किस तरह से इससे बच सकते हैं, हम नेशनल लेवल पर किस तरह से बच सकते हैं. अब आपको क्या करना है, व्हाट इज़ योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे. आज की हमारी स्टोरी जो है वो इस टॉपिक की कंप्लीट हो चुकी है. जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन्फोग्राफिक इस स्टोरी के अंदर ज़्यादा थे. आपने वाइल लिसनिंग द स्टोरी आपने सारे इन्फोग्राफिक अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देखे होंगे. अब आपने ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, आपने ग्लोबल वार्मिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं, एटलीस्ट 5 इफ़ेक्ट्स आपने अपनी कॉपी के ऊपर राइट डाउन करने हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके क्या 5 ऐसे मेजर इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारी अर्थ को होंगे. इसके अलावा आपका एक और होम असाइनमेंट है और वो ये है कि हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर प्रॉब्लम किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्व कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं. नाउ यू हैव 2 असाइनमेंट्स. आपने क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग के जो 5 मेजर इफ़ेक्ट्स हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ में राइट करके अपने टीचर्स को भेजने हैं. एंड हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं उसके लिए भी आपने इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या 5 ऐसे काम करें जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम हो, तो वो आपने अपने टीचर्स को सेंड करना है. आई होप कि आज की आपकी असाइनमेंट आपको बिल्कुल क्लियर है. इस स्टोरी को आपने ख़ुद से एक बार रीड भी करना है और अपने किसी फैमिली मेम्बर को आपने इसको सुनाना भी है. इंशाल्लाह कल हम एक नई एक्टिविटी के साथ दोबारा मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़. Thank you.